For example, the producer will give wages to the labor. So how the producer will be able to give wage until unless there is a return? So producers को कभी problem नहीं है. अगर वो laborers hire कर रहा है, then he will be giving the wages. अगर वो capital market से ले रहा है, he will be able to give the interest. There will be not at all issue. Why? Because the producer is very much sure about the income which he is going to get after investing in the market. The laborers will purchase the and see. तो हम क्या किए, एक तरह से तुम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अगर याद करोगे तो क्या होता है, हम एक फर्म और हाउस होल्ड के बीच में अगर आप रिलेशनशिप आप चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि फर्म और हाउस होल्ड एक तरह से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है. Households, they always work for the firm they give the factory incomes, and these factory incomes will become the part of income for those households who will reinvest to purchase the product of the firm. ये डायग्राम्स आपको याद आ रहा होगा, मैंने क्लास में एक बार बताया था कि फर्म और हाउस होल्ड में कैसे घूमता है. हम ऑर्गेनाइजेशन में मतलब फर्म में जाके काम करते हैं, फर्म मुझे पैसा देता है, जो फैक्ट्री इनकम होता है वही इनकम को हम फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं उसी फर्म के गुड्स को खरीदने के लिए. ओके, सो यहाँ पर भी यह कहा जा रहा है कि द लेबर्स विल परचेज द गुड्स from the market for their own use. So whatever income the laborers will earn from the producers, they will invest that money and they will purchase the good which is available in the market. So does in return the cost, the demand for the goods produced, so in this way the supply creates its own demand. So whatever good is which is there in the market, there is a potential customers for that, and the customers will definitely purchase the goods which is there in the market. Okay. So the basis of this theory is barter system as its basis. Barter system as its basis, इसको हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, देखते जाइए, कोई डाउट्स होगा नहीं. वैसे in its original, the law is applicable to the barter system where goods are ultimately sold for goods. So early in the barter system, we know it very well that जितना भी goods रहता था, we offered that goods, and in return of some goods, we are going to get that. Okay, so therefore, whatever is produced is ultimately consumed in the economy. So main gist is that whatever which is produced in the market, you are going to get a potential customers for that. Sales laws in a very broad way says that Professor Henson has said a description of free exchange economy. These are actually the assumptions of this sales laws. Okay, the main source of demand is the flow of income. So how from where this demand will generate? This demand will generate only when you have some income. Okay, and that income you are getting because you are involved in some process of production. Okay, so until unless you will have some income, you will not become a potential buyers. So this factory income which you are getting from the organization, that will become a part of your saving, and that you will invest to purchase the product which is there in the market. So according to sale law, there is no overproduction. So generally overproduction is impossible. So I mean to say that overproduction is not going to happen. If the production process is continued under normal condition, then there will be no difficulty for the producer to sell the products in the market. So in the very beginning, I said that there can be unemployment, there can be overproduction only when the producer has not assumed the market situations properly. So, but that is a very rare case, and that happens for only for a short while. Okay, but in normal situation, if the production process is being carried out, you will see that the producer will face no problem. Whatever goods or whatever product the producer is placing in the market, there is going to be demand for that. So according to say work being okay, I'll just quickly say the important points. Therefore, the very act of supplying goods implies there is demand for that. अगर आप supply कर रहे हैं कोई good, इसका मतलब है कि there is going to be demand. In such a situation, there cannot be overproduction because supply of goods will not be in excess as a whole. ठीक है, there is no doubt. I don't think there will be any doubt. मैंने important points को black करके bold कर दिया है, ठीक है? But a particular goods may be overproduced because the producer incorrectly estimated the quantity of products with other wants. So देखिए होता क्या है कि as a individual, we don't have the demands for only selected goods. We actually demand the combination of various goods. अगर हमको चाय पीनी है तो सिर्फ हम चाय पत्ती का डिमांड नहीं करते, हम वाटर भी चाहते हैं, हम दूध भी चाहिए, हमको चीनी भी चाहिए, अदरक भी चाहिए, whatever it is, तो हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को यूज करते हैं. तो as a
पार्टिसिपेंट, आप एज अ प्रोड्यूसर अगर आप सिर्फ चाय पत्ती बना रहे हो या से आप मिल्क के प्रोड्यूसर हो, तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क will be consumed in the market. So as a producer, what you have to do, you have to correctly estimate the quantity of particularly your goods that is going to be demanded in the market, because your goods will not be demanded in isolation. ठीक है, अगर हम मोबाइल खरीद रहे हैं तो हमें सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अगर हम माउस बेच रहे हैं तो हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें particularly मेरे commodity का क्या demand होगा। So but JS Mill was another economist who has actually supported the Say's laws, and he says regarding the impossibility of general overproduction and general unemployment. So he also supported that Say was very much correct by saying that there is no overproduction or there is no unemployment. According to him, the Say's laws of market does not consider the possibility of overproduction and also rejects the possibility of decrease in demand of goods produced in the economy. By employing more factors of production, there is an increase in the level of employment and therefore the profits are maximized. तो जेएस मिल ने कहा कि सेज ने ऑब्वियसली ओवर प्रोडक्शन को और द पॉसिबिलिटी की डिमांड डिक्रीज कर जाए, इसको कभी नहीं माना। ओके, उन्होंने कभी नहीं माना कि ओवर प्रोडक्शन होगा, और ये सेज ने कभी नहीं माना कि डिमांड कभी घट भी सकता है। ओके, बाय एम्प्लॉइंग मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देयर इज ऑलवेज इंक्रीज। तो सेल्स का कहना था कि अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन घट जाए तो हम बाय एम्प्लॉइंग मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हाट वी कैन डू, we can increase the demand for the goods. Okay, so there can always be a situation of profit in the market. Saving and investment equality. Income accruing to factors owned in the form of rent, wages, interest is not spent on consumption, but portion out of it is saved, which is automatically invested for the further production. So this production process will never be stopped. Why? Because whatever income that is being generated from the economic activity, as a producer, you will not consume the entire thing. A part of it you will pay as a rent, wages, and interest, which is going to be reinvested in the market, and then again the production process will continue. Therefore, the investment in the production is saving. तो आप which helps to create the demand for the goods in the market. इसका मतलब क्या है कि आप अगर कुछ भी मार्केट में अगर प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक तरह से आपकी सेविंग ही है। वो सेविंग इसलिए है because it will again help to create a demand for that particular commodity. So once your part of the income is invested in the market, it is rest assured that you are going to get a fixed return for that. It is a kind of a saving for you. You are not wasting, you are not using your money where there is a risk aspect. Okay, इसलिए सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी इज मेंटेन. सो वॉट एवर यू सेव एंड दैट मच यू ऑल्सो इन्वेस्ट. तो इस पॉइंट का यही मतलब है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बीच में इक्वालिटी मेंटेन होती है. हम कभी भी प्रोडक्शन करके सारा इनकम को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट में नहीं स्पेंड कर देते हैं, हम कुछ बचा के भी रखते हैं. अगेन दैट वी इन्वेस्ट इन द मार्केट एंड देन अगेन दिस इन्वेस्टमेंट विल बी देयर. सो सेविंग इन इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी इज ऑलवेज बी देयर. क्योंकि हम इन्वेस्ट कितना करेंगे बताओ, जितना सेव करोगे उतना ही ना इन्वेस्ट करोगे. तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल होगा. वॉट एवर यू आर सेविंग, that saving you will again invest for carrying on the production activity. So saving and investment equality is always maintained and to avoid the overproduction. Rate of interest is the determinants of factor. Say's laws of market regards the rate of interest as a determinant factor in maintaining the equality between saving and investments. So rate of interest was always very much important because आप कभी भी invest करते हो तो you will always see the rate of interest aspect. Okay, if at any given time the investment increase the saving, the rate of interest will rise. ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कभी भी अगर देखते हो कि योर इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग सेविंग, आप सेविंग से ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट सपोर्टिंग योर सेविंग एस्पेक्ट, यू आर सपोर्टिंग the investment aspect. Why? Because you are as an individual have analyzed that saving will give you nothing. Saving will give you less of returns because the rate of interest is not going to be there. Okay, so obviously the saving and investment relationship is always there. To maintain the equality, saving will increase and the investment will decrease. So obviously we will always maintain a relationship between saving and investments, obviously, and the rate of interest
plays a very important role in that. Now, labor market. Professor Pigou formulated sales laws in terms of labor market by giving them minimum wages to labor. According to Pigou, more laborers can be employed. So Pigou was also one of the economics who says that if you maintain the minimum wages to labor, अगर आप लेबर को एक मिनिमम वेजेस देते हैं, there will be more demand for labor. अगर हम जानते हैं मार्केट में अगर एक मिनिमम वेजेस अगर परफॉर्म अगर रहता है तो obviously the laborers will be very much interested to work, okay, because they are very much they will feel secure that below this rate they will not be exploited, or there is no chance that they will be getting less than say rupees 300. They will not be getting less than rupees 300. So if you are maintaining a minimum wages to the labor, then there will be more demand for the labor because it will act as a motivation for them. So in a labor market, there has to be a wage rate fixed for the laborers. Unemployment results from, and why this unemployment will result? This unemployment will result only when you are not accepting the wage rate which is prevalent in the market. So in the free market economy, obviously the minimum wage rate is passed by the state, or by the state means Jharkhand, or you can say any by central. Okay, so in that way, whatever minimum wages that has been set by the government, if it is acceptable and being taken care of, then ultimately unemployment will not be there. Yes, unemployment can be there if as a labor, I am not accepting that minimum wage and I'm rigid that I'll be getting, I want more money. Okay, so you're not ready to work with the minimum wages, then it may be a situation that few people will remain unemployed in the market. The trade union may be demanding higher wages. We all know that what is trade union, I need not to explain. You may have a very good knowledge about that. So trade union people, the representatives, they may negotiate with the management. They may say that our workers will not be working in this amount. They want more salaries, or they want less of us to work. So in short, it is under free competition that the tendency of economic system is to provide automatic full employment in the labor market. So these are the rare cases I was discussing, that the trade union may ask for higher wages, or you are not accepting the wage that is prevalent in the market. But if the minimum, but as per the Pigou, if the minimum wages is being maintained in the labor market, then laborers will not remain unemployed. Right? समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. अच्छा भूषण बोले, और बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? तो मैम ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, मैं थोड़ा फास्ट हूँ क्योंकि मैं आप लोग की भी फ्रीक्वेंसी को जानती हूँ कि आप पकड़ लेंगे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ही बोल रही हूँ। ठीक है, ओके, क्योंकि पढ़ाई हो गया। नहीं, अभी ये बहुत पढ़ना है। देखिए, ये जो इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ है, देखिए इम्प्लीकेशन ऑफ जो लॉ है, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी। इसके ये पीपीटी आपको शेयर्ड है, बोलिएगा तो मैं फिर से भेज दूंगी। इसको सिर्फ रीडिंग मांगना है, क्योंकि लॉ जो था मेन की सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, वही मेन लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी ये इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ को आप पढ़ लीजिएगा कि सेज लॉज ऑफ इट्स इम्प्लीकेशन प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंटली ये क्या है, द फुल एम्प्लॉयमेंट द इकोनॉमी इज पॉसिबल और नॉट, fuller utilization of resources, perfect competition. Matlab, these are the assumptions that says laws of market is based on the perfect competition. It depends upon the size of market. There's an automatic adjustment mechanism. Role of money is neutral. So these are nothing to be मतलब इसको समझने का कुछ नहीं है. You have to just mug up these things. Okay. So I'm not explaining laissez-faire policies there. So saving is the social virtue. तो ये पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी होगी. ठीक है, ये पॉइंट्स का छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लेंगे, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है. नाउ क्रिटिसिज्म्स ऑफ सेज लॉज, मैंने आपको पहले ही बताया कि सेज लॉ कहता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, लेकिन ऐसा नहीं है. दैट वाज द क्रिटिसिज्म. ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है. सेल्फ एडजस्टमेंट, जो उन्होंने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज ऑटोमेटिकली एंड सेल्फ एडजस्टेड मैकेनिज्म, जो लॉन्ग रन में ऑटोमेटिकली अचीव्ड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. So that was the criticism. Money is not neutral. Says less that says का कहना था कि मार्केट में मनी एक न्यूट्रल रोल प्ले करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. इंडिविजुअल होल्ड मनी फॉर मेनी कंटीजेंसीज, पीपल कीप कैश फॉर देयर फ्यूचर एक्टिविटीज. तो ये आपको थ्योरी है जो यू हैव टू गो थ्रू. ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल. सेज ने क्या कहा कि ओवर प्रोडक्शन कभी नहीं हो सकता, बट डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? नहीं. ठीक है, तो ये इस थ्योरी को ऑन द वेरियस ग्राउंड्स, दिस सेज लॉज ऑफ सेज लॉज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया. एंड दीज पॉइंट्स विल, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन प्रिवेल्स
जिन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, तो ये आप खुद से रीड कर लेंगे, ठीक है। स्टेट इंटरवेंशन इज देयर, ओके। तो ये सब एंड डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, ये सारे इनके क्रिटिसिज्म्स थे जो आप रीड करेंगे। एंड इफ यू वेयर, आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम बिकॉज एक्सप्लेनेशंस आर गिवन इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, राइट? सो इज दिस थ्योरी ओके विथ एवरीवन? मैम यस Okay. मैम। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इंपॉर्टेंट मतलब समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट, मैम स्क्रीन शेयरिंग हट गया। हाँ मैं हटाई हूँ। नाउ नेक्स्ट थ्योरी जो आप लोग को आज पढ़ाना है वो है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब शॉर्ट में हम बता देते हैं क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी क्या है। अब दिख रहा है ना? यस मैम यस, ओके। Now, quantitative theory of money जो है एक value of money का theory है which has been given by Italian economics. Okay, so in the 12th century there were various economics like Fisher, Marshall, Pigou, Robertson. They have given this quantitative theory of money. तो इसका एक general question होता है कि quantitative theory of money क्या है? ये कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ थ्योरी से, कैम्ब्रिज वर्जन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से कैसे सुपीरियर है, या फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ थ्योरी में क्या डिफरेंसेस या सिमिलैरिटी है। यही 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मिल्टन फ्राइडमैन ने ये थ्योरी को बनाया था जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहता है कि देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। तो ये थ्योरी का सिर्फ यही एकमात्र मतलब कहते हैं कि जो जान है, जो मेन जिस्ट ऑफ द थ्योरी है वो यही है कि जितना ज्यादा सब क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई होगा मार्केट में, द प्राइस लेवल विल इंक्रीज। तो ये कोई नया बात है क्या, तुम बताओ तो? As an economic student, we all know this or not. Whenever there is a excess supply of money, then the RBI will play its important role through monetary policy. The excess money is taken away so that the inflation is controlled. ये तो तुम हम सबको ही जानते हैं, ठीक है। तो इसी थ्योरी को फ्राइडमैन ने अपने भाषा में कहा कि whenever quantity of money मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्राइस तुम्हारी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि मनी का जो वैल्यू है वो घट जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि पैसा का वैल्यू घट जाएगा, मतलब थोड़े से सामान खरीदने के लिए लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, means the value of money with the 100 rupees, if you were purchasing 3 bottles, now with the same 100 rupees you will be able to purchase only 1 bottle. So it means that the direct relationship, so हम ऐसे भी जानते हैं, इसको इकोनॉमिक्स से हट के समझो कि जैसे कोई भी चीज अगर ज्यादा में होता है ना तो उसकी वैल्यू घट जाती है। You keep on giving messages to someone, people will stop looking at your message. ठीक है, तो ऐसे ही होता है, अगर मार्केट में भी कोई चीज बहुत ज्यादा दे दोगे तो उसका वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। तो यही चीज इकोनॉमिक्स के टर्म में भी है। ये रियल लाइफ से तुमको हम बताएं, इसको आप इकोनॉमिक्स में समझिए कि मोर क्वांटिटी ऑफ मनी, अगर मनी का बहुत ज्यादा सप्लाई है मार्केट में, देखोगे कि सब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, देन द जनरल प्राइस लेवल विल ऑब्वियसली इंक्रीज। एंड दिस इज जस्ट रिवर्स। इनवर्स में क्या होता है, when the quantity of money is decreased, the value of money will increase. Okay, so this theory is the main gist of this quantity theory of money. As per this theory, increase in the quantity of money, the price level increase in the same proportion. तो जिस quantity में आप पैसा को बढ़ा देंगे इकोनॉमी में, उसी क्वांटिटी में the price level will also increase, and the quantity in which you will decrease the money supply, in that level only the price level will decrease. So the proportion will be equal. As per J.S. Mill, the value of money, other things being the same, varies inversely with the quantity of money. So J.S. Mill ने कहा, every increase in the quantity of money lowers the value and with diminishes, raises its in the ratio exactly equivalent. According to Professor A.C. L. Day, the quantity of money states that the price varies in direct proportion to the quantity of money. If the quantity of money doubles, so will the price level. So these are the different economics who have supported the concept of Friedman, and they have given different definitions. So it's not important that you should mark up all the things. Any one of the definitions, if you remember, that is enough. In the words of Fisher, other things being unchanged, as the quantity of money in circulation increases, the price level increases in direct proportion. So everybody is saying the same thing, that if the quantity of money is supplied in the market is more, then you will see that the price level will increase. Okay.
द टू इक्वेशंस, अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का दो इक्वेशन है, एक होता है ट्रांजैक्शन अप्रोच और फिशर इक्वेशन, और है कैश बैलेंस और कैम्ब्रिज इक्वेशन. सो देयर आर टू इक्वेशंस दैट यू हैव टू स्टडी. फर्स्ट इज द ट्रांजैक्शन अप्रोच और फिशर अप्रोच, एंड द नेक्स्ट वन इज कैश बैलेंस और कैम्ब्रिज अप्रोच. अब ट्रांजैक्शन अप्रोच को जिसने फिशर ने दिया था, आयरविन फिशर, इन हिज बुक परचेजिंग मनी ऑफ पावर ऑफ मनी in 1911 has demonstrated the transaction approach of theory of money. What he said, the quantity theory is correct in the sense that the level of price varies with the quantity of money in circulation, provided the velocity of circulation of money and the volume of trade are not changed. So Fisher has said that the quantity of money in circulation will definitely have effect on the level of price, provided two things has to be constant. First is the volume of trade and the velocity. जिस velocity में पैसा घूम रहा है, जिस speed में पैसा घूम रहा है, that has to be the same. And the trade, whatever export import that is being there in the country, that has to be the same. So quantity of money actually will have impact in the level of price, provided two thing has to be constant, that is velocity of circulation of money and the volume of trade, which shows that the value of money changes inversely with the quantity of money. ठीक है, यही बात है जो हम आपको थ्योरी में बताए कि वैल्यू ऑफ मनी अगर घट जाएगा अगर क्वांटिटी ऑफ मनी आप मार्केट में बढ़ा देंगे. इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट में बढ़ जाता है, देन इट विल हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द प्राइस लेवल. जनरली द फिशर थ्योरी ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी इज यूज्ड. अब आप इस डायग्राम को देखिए. Here you will see that the quantity of money is increasing. M1, M2, the price is increasing P1, P2. Okay, so there is a direct relationship between the quantity of money and the price level. Now Py is equal to MV plus M dash V, और अगर आप इक्वेशंस इसको देखेंगे, MV is plus M dash V dash YY. My is quantity of money or credit money, velocity of circulation of money. Y is, you have to just this equation you have to remember, because maybe in MCQ these equations can be asked. It shows the actual GDP. Now concepts of supply of money. अब supply of money को अगर आप देखिएगा, जब हम आपको quantity of money and velocity of money की बात करें, quantity of money will include two things, that is M and M1. हमारे मार्केट में नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं और क्रेडिट मनी होती है. क्रेडिट मनी मीन्स दोज मनीज व्हिच आर देयर विद द बैंक एज अ डिपॉजिट्स. So quantity of money is that money, that quantity which is available for purchasing goods and services. So quantity of money अगर आप बात करें तो लोगों के पास वो पैसा जिससे वो goods and services को purchase कर सकते हैं. Classical economist in his Fisher has also included money is used for the medium of exchange. Classical economics भी कहते हैं कि मनी वो चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को सपोर्ट करता है, इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. ये सब तो बहुत बच्चे वाली चीज है जो हम जानते हैं. So entire money is circulation is available for purchasing. So whatever money that is there in the market, that is for the purchase of goods and services. Now what is velocity? This term has come to you as a new concept. Velocity means the numbers of time the money is changing hand. अच्छा, एक ही पैसे को हम कितना बार चेंज कर रहे हैं हाथ. ठीक है, जैसे आप हमको पैसा दिए, हम उस पैसे से पेट्रोल खरीदे, फिर पेट्रोल वाला जाके चावल खरीदा, ठीक है, वो राइस वाला फिर जाके कहीं से और कुछ खरीदा. इट मीन्स दैट द स्पेसिफिक टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स द यूनिट ऑफ मनी परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज. Considering that Ram has a rupee, he buy pen from Syam for that 1 rupees, Syam buy the sweets from Mohan from the same rupee. To know the velocity of money in a country, we need to understand the gross national product, which has to be divided by the money in circulation. So this is the formula. If you want to know the velocity of money, then total GNP you have to divide with the money in circulation. That is GNP divided by this slash shows the divide sign, money in circulation. Not demand for money. अब पैसे को हम क्यों डिमांड करते हैं? वेरी कॉमन सी बात है कि हम कमोडिटी खरीदने के लिए डिमांड करते हैं, कोई गुड्स एंड सर्विसेज को. जैसे मनी इज डिमांडेड because it does the job of medium of exchange. Okay, demand for money depends upon the exchange being done in the society. इकोनॉमी जितना फास्ट होगा, इसमें जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, मनी उतने ही ज्यादा मूव करता है. Trade transaction. Why? The trade transaction means the gross physical quantity of goods and services sold in the form of money through trade transaction is a specific time period. तो हम कितना एक specific time period में how many times of
how many numbers of time we are purchasing goods and services, that will actually shows the transaction. As many times the object is sold in a specific period, it is counted as a trade transaction. तो कितना बार कोई भी commodity market में बिकता है, ठीक है? Now the price level, average price of each unit is Y. In a specific period, the price is P. In detail, the general price level, the demand for money क्या है? The P into the trade transactions. These are the formula which you have to. Now these are the assumptions. इसको हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि you can go through that कि assumptions क्या है. अब इसको याद करने वाली चीज है कि quantity theory of money तब prevail करता है जब when there is a constant velocity of currency, when the economy situation is full employment, when there is a when you will see that the constant proportion of bank money and currency is there. So these things you have to just mug up. Okay. Now this quantity theory has also been criticized on different ground. That is also just a theoretical aspect. Unrealistic assumption है, variable is not dependent, lopsided, इसका loop-sided भी है theory इसका. The price level is not a passive factor. There is an application only in the case of full employment. Quantity theory of money को सिर्फ हम full employment में ही चला सकते हैं. तो ये सब कुछ theory है. This theory will get fail if there is a trade cycle inconsistent है Helm के हिसाब से. It ignores the effect of rate of interest. So these are just the theory. Okay. So in this theory, you have to just understand the quantity theory of money kya hai. Okay. What are the different demerits of that, and what are the different criticism or done. So these are the 11 points, 11 or 12 points that you have to remember. Okay. Fine. Yes. आप एक बार इस पीपीटी को एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा. कोई डाउट होगा you can individually call me and I will explain you. अब हम जानते हैं ये तो ऑनलाइन क्लास है. I have to restrict to some कुछ limitations है, लेकिन हाँ इस क्लास को अच्छे से मैं भी चाह रही हूँ जितना हो सके. Yes, ma'am. है ना. देखो अगर एकदम नहीं सुनोगे तो फिर खुद से भी समझ में नहीं आएगा. देखिए एक पीपीटी एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आप देख पा रहे हैं ना, रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी. ठीक है. रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या है? रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी एक ह्यूमन साइकोलॉजी पे बना हुआ एक थ्योरी है जहां पर हम कहते हैं कि हम व्हाटएवर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट दैट एक्चुअली हैपेंस. तो हम जो परसीव करते हैं वही होता है. एक तरह से एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुमको बता रहे हैं. The rational expectation theory is a concept. It is a modeling technique which is used in the macroeconomics. तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि what is rational expectation theory and what is the implication of rational expectation theory in macroeconomics. तो इसको हम एक कहानी की तरह आपको समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिए. ठीक है. So rational expectation theory is actually a concept. It is actually a modeling technique. And this theory is based on the concept that individual base their decision on 3 primary factors. अब तुम अगर कोई भी decision लेती हो या लेते हो अपने लाइफ में, तो you take 3 things in your mind. First thing is तुम्हारा अपना सोच, your human rationality. Whatever is good, whatever is not good, you will think in that way. The information that is available and the past experiences. Okay. So it suggests that people current expectation of the economy are themselves be able to influence what the future state of the economy will become. So actually हम ऐसे कहते हैं ना कि if you want to become an engineer, you will study in that way. If you want to become a manager, you expect you perform certain kind of you do the studies in that way and you achieve your mission. So it is suggested that people current expectations of the economy are themselves be able to influence what the future states. So if you expect the economy to grow, obviously your contribution towards a productive activity will be more. Okay. So this perception is actually contrast with the idea that government policy influence financial and economic decisions. तो क्या तुम जैसा सोचते हो वैसे ही होगा? ऐसा नहीं होता है. The government may have different plans. The government influence the economy in different way. The economic decisions of the government may vary from what you are expecting. Okay. Economics often use the doctrine of rational expectation to explain the anticipated inflation rate. तो कभी-कभी हम क्या करते हैं,
this rational expectation theory in macroeconomics की अगर आप बात करते हैं, the relevance is that it will help you to forecast certain situations. Like you forecast that if there is in past time, if there is inflation, then in future also the inflation may come. Okay, if you have seen that in certain situation the market is responding in certain manner, you will behave in that manner only. The business cycle is actually a very good example of rational expectation. Is in business cycle we know different phases are there, and in that phases we have assumed that whether the production will be high, the employment will be there or not, what will be the price of the commodity, how the market will be, how the labor will be getting the jobs or they will not be getting the jobs. So rational expectation theory is dominant assumptions model which is used in business cycle. Now, I'll not go very deep. So the takeaway of this theory is that individual use the ability to rationalize while making decisions. So you use your rational, you use your brain when to whether to go for a decision, whether to go for a decision or whether to drop the decision. On average, people hold expectation what will be fulfilled. So हम nearby चीजों को forecast करते हैं कि whether that will be fulfilled or not. So rational expectation, the best guess for the future. We say that rational expectation से हम best guesses कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा. Although people may be wrong, some of the time on average they are right. So many a time, जैसे आप भी guess कर सको कि these are the 10 questions that may come. Maybe that 10 question out of that 4 will come. So many a time your guess will not work. Similarly in the economy, as an individual we guess certain things. अब हम सब guess ही ना कर रहे हैं कि MBA करके बहुत अच्छा job लग जाएगा, the market will respond, और the IT people they are expecting that जो software पढ़ रहे हैं उस software में उनको job लगेगी. Okay, so many a time we expect and we study the past trends, we study the past mistakes. The values of variables like price, output, and employment are important. So how this macroeconomics, the various economics have taken, have given importance to this rational expectation because they have studied different variables. जैसे price को पढ़ते हैं, output को पढ़ते हैं, employment rates को पढ़ते हैं, and the people accordingly they decide whether how the price is responding, how much fluctuation is there in the employment rate, how much fluctuations. देखो अगर तुम मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में अगर तुम कुछ परसेप्शन लगा रहे हो, अगर कुछ अज्यूम कर रहे हो, तो आपको मैक्रो एग्रीगेट्स को पढ़ना पड़ेगा. यू विल एग्रीगेट द इन्फ्लेशन, you will study the overall employment scenario of the country, you will actually study the GDP of the country, and then this rational expectation will help you to reach at the right decision. Okay, so people behave in this way that seeks to people behave in a way that seeks to maximize their profit. So obviously हम कोई भी चीज अगर देखो अगर कोई चीज गलत होने वाला है, we take the अगर हम मानते हैं the economy is going to be worse, then what we do, we take some precautions for that. So ultimately we will, whatever decision we will take, we will make it for the profit purpose. ठीक है, तो अगर हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं, चाहे वो प्रिकॉशनरी हो, चाहे वो हम सप्लीमेंट करने के लिए लेते हो, we always want the business to be performed. We always want the profits to come out of that business. Okay. So expectations about the future inflation influence the current buying decision. ऐसा होता है कि नहीं बताओ. हम अगर सोचते हैं कि भविष्य में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, the price hike will be there, then obviously our quantity of goods that we are going to demand today, it is also affected. We expect the prices to rise more in the future. We will start purchasing the goods and we will start doing the stock. Okay, so individuals create expectation based on all the available information. Implications. एक चीज इसमें आप जान लीजिए, वीक, देखिए पूरा चीज तो नहीं हो पाएगा, आप लोग भी समझ रहे ना, पूरा थ्योरीज तो पढ़ाना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको सिर्फ जिस्ट एक रिवीजन ही दे सकती हूँ. तो वीक रैशनल एक्सपेक्टेशंस होता है, एक स्ट्रॉन्ग रैशनल एक्सपेक्टेशंस होता है. वीक मतलब पीपल हैव एक्सेस टू लिमिटेड इंफॉर्मेशन. अब तुम वीक रैशनल एक्सपेक्टेशन मतलब व्हाट means that your decisions are not that strong. That means your decision based on the information, that information is not concrete or the information is not updated. You make the optimum decision based on the limited information. And strong rationale means what? Available information, the past trends,
ये सब तुम्हारे पास फुल है नॉलेज, द फुल ऑप्टिमम डिसीजन बेस्ड ऑन योर फुल नॉलेज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रैशनल एक्सपेक्टेशंस. ये थ्योरी तो समझ में आई होगी सबको. हेलो. Yes, Yes, ma'am. मैडम आपका टाइम खत्म होने जा रहा है. हाँ, ये क्लास खत्म होने वाला है, क्या करें, इतना पढ़ाना चलिए. अच्छा ठीक है, आज हम लोग एक्चुअली जो भी पढ़े हैं सब क्लियर है आप लोगों को ना. अगर नहीं क्लियर है तो आप पीपीटीज को देखेंगे, यू विल आस्क योर डाउट्स टू मी. हम इन नटसेल हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू द जिस्ट ऑफ द थ्योरीज. एक Yes. चीज बोला जैसे ये स्ट्रॉन्ग रैशनल एक्सपेक्टेशन है, तो सपोज कोई बहुत अच्छी जितने भी सक्सेसफुल कंपनी है तो उनका Yes. रैशनल डिसीजन बहुत ही अच्छा होता होगा. Yes, obviously. हाँ, that's the reason why they hire the market experts, they hire the financial analyst, because they give the very right and accurate information about the market, because on that information only they can accurately apprehend that whether the inflation will be there, whether what will be the response of the customers in the market. Okay, so weak and strong. So this is a very important theory, rational expectation theory, which is helping the macroeconomics aspect in a lot of manner. So this theory is actually a modeling theory of macroeconomics. तो हम अगर कोई मॉडल बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट का बनाए, आउटपुट का बनाए, प्राइस का बनाए, सो रैशनल एक्सपेक्टेशंस कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, भविष्य में कैसा मार्केट होगा, इस चीजों को आप स्ट्रॉन्ग एंड वीक के बेसिस में यू कैन सी. ठीक है. So the time is over. If you have any queries, you can always call me. In my personal mobile number, you can give me a call, you can drop me a mail. All the best. You try to go through the PPTs. And इतना बताने के बाद मुझे लगता है कि जब आप PPTs पढ़ेंगे तो lots of things will be clear to you. अगर नहीं समझ में आएगा, you can call me. Okay? Yes. Okay. Now the time is over. Actually, I have planned a quick quiz, but that is not possible. Rumna ma'am also may have to go now, and now you all might be tired by now because you have been attending 3 classes from since morning. So I will not take much of your time. So thank you all of you for your active participation and for patience listening. Thank I you, hope ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. I'm I closing know the you all meeting. are missing. Okay, ma'am. Okay.